हेलो। सुनाई दे रहा है क्या? तो जैसे कि मैं बोला, मीन स्क्वायर एरर को हम लोग को रिड्यूस करना है। कैसे? जो मॉडल हम लोग बनाएंगे उसमें मीन स्क्वायर एरर सबसे कम हो। तो मीन स्क्वायर एरर के बारे में फिलहाल जानते हैं, उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से। ये अगर मेरा 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है और ये सपोज मेरा डेटा पॉइंट है, ये मेरा डेटा पॉइंट है, ये दूसरा मेरा तीसरा है, हाँ पांचवा डेटा पॉइंट है। और अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन तो ठीक से बन नहीं रहा है। आई विल यूज, इफ आई यूज दिस वन, ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन मैं बनाती हूँ, ठीक है, तो ये जो डेटा पॉइंट है, सपोज इसका नाम है x1, y1, है ना। और इसका सपोज डेटा पॉइंट का वैल्यू है x2, y2, ठीक है। और ये वाला डेटा पॉइंट का वैल्यू है x3, y3। इसका वैल्यू है सपोज x4, y4 एंड सो ऑन, बहुत सारा हो सकता है x4, y4। अच्छा, तो ये जो मॉडल या स्ट्रेट लाइन में बनाई, इसका सपोज इक्वेशन है y hat equals to m x hat plus c। just consider, ठीक है, y m x hat plus c। जस्ट मैं सपोज मैं फाइंड आउट कर लिया कि m एक वैल्यू है, तो ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ जस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज किए हैं देख लेते हैं, y i hat, ओके चलेगा, है ना। तो अब देखो, जब ये जो फर्स्ट डेटा पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे बताएगा कि कितना फिट हुआ है लाइन। तो ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा? फॉर x1 whatever, for value x1 what we are getting y value for the given model, this is our y value। ये हम लोग का y वैल्यू है, y वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ दिस इज आवर y1, then the y value of the uh, corresponding straight line along with given x1, it will be y1 hat, y1 hat, है ना। तो x1 के लिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या होगा? y1 hat, which is falls into the model। तो मॉडल में उसका वैल्यू क्या होगा? y1 hat। देखते हैं, अगर गिवन x वैल्यू x2 है, then what is the y value for the model, which is suppose this one, the y value will be y2, suppose it is y2 hat, ठीक है। एरर कितना हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मेरा एरर हुआ y1 माइनस y1 hat, y1 माइनस y1 hat, दिस इज आवर एरर, ठीक है, दिस इज आवर एरर। फिर सेकंड पॉइंट की एरर क्या होगा? e इक्वल्स टू कितना होगा? अब बताओ प्लीज, एनीवन, व्हाट विल बी द एरर फॉर द सेकंड पॉइंट? ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? प्लीज एनीवन टेल मी।
will be the distance? Is there anyone? Hello, please unmute your microphone and tell me what will be the error for the second point. For x2, y2 point, what will be the error if our model is this one, this straight line is our model? Please anyone unmute your microphone? Hello, hello, hello. Hello. You should write your roll number in the chat box. I can see only 4 people has written their roll number, but participant is 9. So you should write your roll number in the chat box. Hello. Hello, hello, hello. Anjali Kumari, can you unmute your microphone? Kiran Kumari, Asha, anyone? Anyone can unmute your microphone? Yes, ma'am. Okay, please tell me what will be the error of the second point. मैम हम अभी जस्ट ज्वाइन हुए तो हमको पता नहीं है कि आप क्या बता रही हैं। तो फर्स्ट क्लास में नहीं थे आप? वेरी गुड, वेरी नाइस। सो विवेक कुमार, hear me? Vivek Kumar, can you hear me? Hello. Okay, no one is responding. Very nice. For the second point, the error will be what? It will be y2 minus y2 hat. y2 minus y2 hat. In this way, for all the points, we can find out this data or this, what can I say, this error value. So, total error value will be what? Total error value will be of all the error. But there is a problem because sometimes we can see this y1 is at the upside of this line. Sometimes it is downside, that means y2 even of y2 is downside of this line. कभी वो नीचे है. Sometimes y1 is y1 hat. Sometimes the y2, like y2 is lesser than y2 hat. We just simply add, what will happen that the error, ऐसा हो सकता है कभी कभी एरर ऐड होने के बजाय एरर रिड्यूस हो जाए कि y2 hat वैल्यू से अगर बड़ा होता है या y2 वैल्यू y2 hat वैल्यू से अगर छोटा होता है, total value or total value of this thing will be total value of this thing will be negative. So कोई नेगेटिव नंबर को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या होता है कि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है. तो सब्ट्रैक्शन होने से हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि एरर कम हो रहा है, बट इट इज नॉट हैपनिंग इन रियलिटी. तो क्या होगा कि जितना एरर हो रहा है उसको सिर्फ मुझे ऐड करना है. So to find out the original value or the actual value, we have to ignore the negative value. We have to ignore the negative error. So that what we can do,
we just find out the mean square. So if I just do something like this, total error equals to total error will be equals to, suppose, y1 minus y1 hat its whole square y2 minus y2 plus y3 minus y3 at its whole square plus dot 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 up to number. N data points, n data points, and then up to n number you should add these errors. Up to n numbers, that means if you have n data points as a training set, then you are going to add the error for n data points. है ना? The first data point हो गया y minus y1 hat its square. Then second data point के लिए आपका error हो गया y2 plus y2 hat its whole square, and so on. n number of अगर data point रहता है तो n number तक आपको इसको add करना है. That's all. So if this is our representation, then we can say our total error is, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, of E equals to summation of what, or we can write just I equal to summation of equals to within a bracket I, because there are n number of points, varies from 1 to n. Sorry, I varies from 1 to n. yi minus yi mean square error. Okay, this total thing is mean square error, and you can see this part never can be negative value because there is a power. What will happen? The process will be added every time, and total error will be calculated, or will be the resultant error. So based on this error value, we can find out what will be the slope of the straight line and what will be its, what can I say, the constant value. That means m and c. If our equation is y hat equals to mx hat plus c, what will be the value of c, what will be the value of m, we can find out based on analyzing this mean square error value. How to analyze this, that we need to know. So what is happening here, we need to minimize this value, because error should be minimized. So our minimize this value, as well as we want to find out the value of m and value of c, then our model will be built. Okay, so that's all. Now see how this is happening. Okay, तो यहाँ पे वही चीज, सेम चीज बोला गया है. Should write the roll number again in the chat box. You should write the roll number again in the chat box. Okay, linear regression derivation you can see. So यहाँ पे बोला गया है classic. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रेड जो सर्कल है वो सारा मेरा डेटा पॉइंट हो गया, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरा प्रेडिक्ट, मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरा इमेजिनरी एक मॉडल है. तो इस मॉडल से सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे मैं एनोटेट करूंगी, तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे मीन स्क्वायर एरर से पता चलेगा. ये सारा डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे मीन स्क्वायर एरर से पता चलेगा. तो what we are supposed to do, we will reduce the mean square error and we want to find out the slope of the straight line along with its
along with its constant value. That means after finding this, we can say this is the best fit model. This is the best fit model. So let's consider given n input and the goal and the output. We define the line of the best fit is yi hat plus alpha plus beta xi. So where beta is our slope and alpha is the corresponding constant. Beta is our slope and alpha is our corresponding constant. That is we want to find out. So to find out this thing, we need to minimize this value. That is the mean square error value. We need to minimize this mean square error value. Okay. So how this equation has, we have already discussed here how this equation has been formed. We have discussed it. You can see this equation, the mean square error has been written here. How to calculate the mean square error? Why the equation is like this? We have already discussed. Now we will see how to do it, how to minimize. Minimize cost. So यहाँ पे क्या बोला गया? Where yi of y at the same data point di. तो कोई डेटा पॉइंट di में y वैल्यू क्या होगा yi और x वैल्यू क्या होगा xi. और जो प्रेडिक्शन वैल्यू है या प्रेडिक्शन जो कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू है इन di, दैट yi है. नेक्स्ट कैसे ये मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस किया जाए वो हम लोग देखते हैं. Function is, so this is also called cost function. To minimize our cost function is, we must find where the first derivation of hi is equal to 0. तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है. आप लोगों को पहले से पता है कि फर्स्ट डेरिवेशन उसका 0 सेट कर लेंगे. फर्स्ट डेरिवेशन को 0 सेट करने से उसका पैरामीटर का जो वैल्यू निकलेगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से वो पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो सकता है. दैट वी ऑलरेडी नो. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू the derivation or derivative we have to perform first order derivative. After that we can get the corresponding constant as well as the slope value to find out the minimal error function or to minimize the error. बोला गया है द क्लोजर अल्फा एंड बीटा आर टू 0. तो अल्फा बीटा का वैल्यू जितना 0 से पास होगा उतना क्या होगा, टोटल एरर 0 के आसपास हो जाएगा. सो द एरर विल बी आल्सो रिड्यूस. लेट्स स्टार्ट विद द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा. सो अल्फा का परफेक्ट वैल्यू निकालना है जैसे कि मेरा टोटल एरर कम हो सके. सो वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द अल्फा. और कॉस्ट फंक्शन इज s इक्वल टू i 1 to n. जैसे कि मैं कंस्ट्रक्ट किया अभी y इक्वल समेशन ऑफ 1 to n बिकॉज़ देयर आर n डेटा पॉइंट्स yi minus yi hat its whole square. This is our mean square error function. So we can rewrite this because yi hat is nothing but, you can see yi hat is nothing but alpha plus beta xi. I hat is alpha plus beta xi. So we can replace this yi hat. yi hat कौन है? ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो मॉडल बनने वाला है उसका प्रेडिक्टिव इक्वेशन में बना लिया. yi plus alpha beta xi. yi hat equals to alpha plus beta xi. That is our predictive model, and alpha, we don't know the value of alpha and beta. Want to find out the value of alpha and beta. So we can rewrite this equation something like that. Instead of writing yi hat, we can write or we can replace yi hat. Okay, after that we will perform derivative of this total function based on alpha. Okay, so first order derivative based on alpha. So ds by d alpha equals to -2. Why it is -2? Because the
because you know the power is to the power 2, so it is 2 will come 2 will come here, 2 will come here, and I equal to 1 to n, I equals to 1 to n, so it will remain I equals to 1 to n because there is no alpha function associated with it. ये अंदर है तो ये वैसा होगा. So what will happen that of some जैसे मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ dy dx equals to, if it we want to find out derivative of x square, it is equals to 2x to the power 2 minus 1 is this. So 2x, its derivative will be 2x, so 2 will come in here, so 2 यहाँ पे आया, then I equals to 1 to n, yi के साथ associated क्या बोल सकते हैं, alpha term नहीं है, so it will remain as it is minus alpha, minus alpha, that means that function will remain as it is, the total function then it will remain as it is, alpha minus beta xi. ये जो माइनस वैल्यू है यहाँ पे चला गया, कंट्रोल Z, और हो रहा है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, so we will going to find out the derivative of this one. So this derivative value will be, if this is a constant term because there is no alpha associated, so the value of this will be 0. Value of derivative of minus alpha is minus, and derivative of minus beta xi is 0 because there is no term associated with alpha. तो यहाँ पे कोई alpha term नहीं है, तो इसका भी derivative 0 हो गया, तो ये total thing का derivative मेरा हो गया कितना, -1. So that's why this minus value is coming here, minus value is coming here along with this is remaining part, है ना? समझ में आया आप लोगों को? तो ये बेसिक डेरिवेटिव है, आई थिंक आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में या मैथ्स में ये तो पढ़ी हो, डेरिवेटिव मुझे सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग. तो ये अगर डेरिवेटिव करने के बाद ये अगर टोटल वैल्यू है, वी वांट टू फाइंड आउट the minimum value of alpha and beta, so I am making the first order, I am making this first order derivative value as 0, so I am setting the value 0. After that, if I want to find out the solution, it is I equal to 1 to n yi minus alpha minus beta xi equals to 0. If this is so, then what will be the value of alpha? Let's check. Alpha value क्या होगा? तो I equal to 1 to n yi, इसको जस्ट सेपरेट कर दे रही हूँ हर एक टर्म को, it will be yi I equals to 1 to n summation of I equals to 1 to n yi minus I equal to 1 to n, then यहाँ पे क्या टर्म है alpha, that means how many times alpha will be added, so n times alpha will be added, so this value will be alpha, n alpha will be added, so this is n alpha, है ना? तो n alpha यहाँ पे हम लोगों को मिला है, this is our n alpha minus, फिर सेकेंड टर्म क्या हुआ, so n equal to, so summation of I equal to 1 to n xi, so how many times this beta xi will be added, up to 1 to n times beta xi will be added, and I value will be changed every time, I value हर बार चेंज होगा. तो उसके बाद मैं n alpha, इसको अगर सॉल्यूशन में निकालती हूँ, तो n alpha will left side and the other term will be moved into the right part, in the right side, and after solving this we are going to get alpha equals to what, summation of I equal to 1 to n yi divided by n minus
beta into I equal to summation of I equal to 1 to n divided by n. हाँ, को मिल रहा है. This is our alpha value. So हम लोग को मिला, ये डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग को मिला. So this is what आई वैल्यू है उसका सारा समेशन divided by n. So we are adding one. Meaning of this one, meaning of this is we are adding y1, y2, y3, तो ऐड कर रहे हैं divided by n. तो y1 plus y2 plus dot plus yn है ना, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं divided by n. So this is the mean value. This is the mean value of y. So we can say this is equals to, so what is y bar? It is represented by y bar. And the next thing is what? Next thing is we are, the remaining part is beta. Then this one. This part is summation of I equal to 1 to n xi. That means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus up to xn divided by n. That is the mean value of x or x bar we could write. ये जो x बार और y बार आपको कहाँ से मिलेगा? x बार और y बार आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी आपको डेटा पॉइंट गिवन डेटा पॉइंट रहेगा वहां से आपको मिलेगा. का मतलब क्या हो गया? x बार का मतलब यहाँ पे सपोज आपके पास जो भी डेटा पॉइंट है, सपोज 2, 3, 5, then 3, 6, ऐसा जो भी आपका डेटा पॉइंट रहेगा उसमें x बार क्या होगा? x bar equals to plus 4 plus 3 divided by how many data points is given here? इनका वैल्यू कितना है? So all the data points, that is y bar equals to 3, क्या है? 5, 3 plus 5 plus 6 divided by what? Divided by n, which is 3. कितना डेटा पॉइंट है? 3 डेटा पॉइंट है, तो 3. करके मुझे x बार और y बार मिल जाएगा based on the given data point which is in what can I say? तो वो सारा मेरा x बार और y बार ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा. So now we got the equation alpha equal to y bar minus beta x bar. तो अल्फा का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा only after getting the value बीटा. तो बीटा का वैल्यू मिलने के बाद मुझे अल्फा का वैल्यू मिलेगा, राइट? तो वो कैसे मिल सकता है देखते हैं. फाइंडिंग्स ऑफ बीटा. फाइंडिंग्स ऑफ बीटा. बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या मिला है? s का वैल्यू क्या है? तो जैसे पहला वाला s इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, पहला वाला s इक्वेशन जैसे हम लोग को मिला था mean square error value. So mean square error value we are again considering the same mean square error value, the same equation that we are considered earlier. तो पहले जिस इक्वेशन को इसी इक्वेशन को कैलकुलेट किया था, अभी भी इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं. तो इस इक्वेशन को कंसीडर करने के बाद फिर से हमको इसको डेरिवेटिव करना है, बट बेस्ड ऑन बीटा. तो अल्फा यूज करके मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं बीटा के बेस पे बेस्ड ऑन बीटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेशन. तो बेस्ड ऑन बीटा अगर मैं डेरिवेशन फाइंड आउट करती हूँ तो मैं लिखूंगी by d beta, ds by d beta, which is equals to d by d beta within the bracket I equals to 1 to n, because the summation we are going to find out I equals to 1 to n summation of to 1 to n yi minus alpha beta si square. So again we are going to find out the derivation. The derivative part you also know how to calculate it. 2 will come in the front, 2 will come in the front. After that we are going to consider the total thing, which is
just 1 minute. Total part, which is we are going to find out the derivative. That means 2 will come first, then the total term, which is yi minus alpha minus beta xi into then the derivation of yi alpha and beta xi. So derivation of yi is what? D by dv 1 to n yi minus d by d beta, then summation of I equal to 1 to n alpha. So we are just derivating this thing again, minus xi will come in front, whatever xi will come in front, then summation of I equals to 1 to n, summation of I equals to 1 to n d beta by d beta. So that is 1. Okay. You can see there is no beta term here, no beta term here, so that the derivative of these two part will be 0, and derivation of this part will be 1 multiplied by xi. Xi means what? Summation of I equal to 1 to n. Written summation equals to I equals to 1 to n xi. I equals to 1 to n xi. Okay, so as it is written, summation equal to I equal to 1 to n, so we could find out that what will be the value of xi. So as at the beginning it is written, so repeatedly you don't have to write this. It is okay. After that, we want to make it, if I want to make it minimum value of s, minimize this s, then derivation should be 0, derivative value will be 0, first order derivative will be 0, so 0 equals to what? Minus 2, because the minus part is coming due to this minus value, so minus 2 I equal to the summation of I equal to 1 to n xi into yi minus alpha minus beta xi. Okay, again बोला गया है, यहाँ पे जो xi वैल्यू है, xi को अगर सबके साथ सारे टाइम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक summation of I equal to 1 to n xi yi minus alpha xi minus beta xi square, that is equals to 0. If you solve this equation, I equal to 1 to n xi yi minus summation of 1 to n xi minus summation of I equal to 1 to n xi its whole square. This equation is done. If we see the next part, तो यहाँ पे क्या किया मैं xi पार्ट को सेपरेट कर लिया एंड यहाँ पे xi yi बोला है तो ओके अल्फा पार्ट यू कैन से अल्फा xi पार्ट था, अल्फा xi था, so this term is I to n alpha xi, and what is the value of alpha? We have already computed the value of alpha here. Alpha equals to y bar minus beta x bar multiplied with xi. This is our total value. Our ultimate equation. After that, we need to solve it again, and we need to simplify this again. So the next part is here. I want to simplify this one. Just 1 minute. So if you want to simplify this equation, this is coming like I equal summation of I equal to 1 to n xi yi minus y bar xi minus beta into I summation of I equal to 1 to n xi square minus x bar xi equals to 0. The beta part will be calculated like this, beta part or b, it is written b or you can write beta anything. So beta part equals to this one, that means this term divided by the term associated with this beta. So this is our ultimate beta value. So if we get beta value here, if we get beta value here, so based on beta value we can find out the alpha value because we know y bar value and x bar value. So in this way we can find alpha, that means the slope, and the beta value. That is the constant.
तो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाने से उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का परफेक्टली मुझे मिल जाएगा कि उसका स्लोप कितना होगा और उसका कांस्टेंट कितना होगा सो दिस इज आवर लीनियर रिग्रेशन. सो इन लीनियर रिग्रेशन हम लोगों को क्या पता चला कि वी नीड टू फाइंड आउट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज fitting in the best way with the training data set or given data point. To find out this, what we need to do, we have to find out the alpha or that means the slope of the straight line along with its constant part. So how we can achieve this, we need to find out. For that we need to find out the mean square error equation, and we have based on the mean square error equation we need to minimize the value of mean square value. Okay, so for that we have taken the help of the first order derivative of that equation based on alpha and beta, and further we can solve this alpha beta value. We can solve the equation to find out the alpha beta value, and how the total process is given here. You can if you follow, you will get the total procedure. तो यहाँ xi yi का मतलब क्या है, हर एक डेटा पॉइंट का जो xi yi वैल्यू है वो हम लोग को पता चलेगा. जैसे यहाँ मैं लिखी थी 2,3 4,5. so for each of the data point we know what is the value of its x part and y part, along with this term is y bar. So we know what is y bar means. That means mean of that means the mean value of all the data points of the y part. Okay, and x bar means that is the mean value of x part of all the data points. In this way you can calculate this beta. So if you take help of any real life example or real some example to find out alpha beta, then it will be, I think, easier to understand. Okay, so I will provide you one problem. If you solve that problem, I think it will be much more clear to you. Okay. So, okay, do you have any question? Hello? If you have any question, then please ask. So next what we will do, we will see the code for it. And जैसे कि हम लोग का scikit-learn मॉडल में scikit-learn जो पैकेज है बेसिकली उसमें ऑलरेडी linear regression के लिए and just you have to call the linear regression function. It will work very nicely. ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट देना है, बस ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को फिट करना है. तो उससे ही टोटल रिजल्ट हम लोगों का निकल के आ जाएगा कि मॉडल कैसा होगा और वो परफेक्टली क्या करेगा, न्यू कमिंग कोई पॉइंट के लिए वो डिटरमाइन कर देगा. सो वी डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर ऑल दिस थिंग्स. दैट मीन्स टू कंप्यूटेशन ऑफ